Welcome back for this week's Happy Minds. Namaste, Ravnath, Rupesh, Smita, Pranam, Prakash, Parul. Lovely to see all of you. Second. Anji, Ankit, Prashant, Akshay, Rajendra, Ramdev. Lovely to see all of you. This is Happy Minds number 1182. And those who have joined us for the first time, welcome to Happy Minds. And all of you have just joined in on YouTube. Welcome to this week's Happy Minds. So, जो लोग पहली बार आए हैं, you can just type in your city if you're from some other city from Pune. So आप type कर सकते हो, and you can also type in first. So first time from whatever city you are from. So मुझे मालूम पड़ेगा कि आज कौन कौन नया आया हुआ है. So you can do that. मेरा आपकी कृपा से सबका. Absolutely love you, Naren, for that. Actually, it's His grace. It's everything is possible. तो हम तो सिर्फ माध्यम है, and the source, the power, the energy, तो सब उन्हीं की है. तो उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहे हैं. Absolutely. And this is one of my favorite bhajans. And whenever I am listening to this bhajan, it's somewhere I'm lost. And it's such a wonderful start with this acknowledgement कि हमें लगता है ना हम बहुत कुछ कर रहे हैं. हमें लगता है कि सब हमारे कंधों पे है. तो for some minutes, for some seconds, whatever time we experience it, it's kind of, you let go of all that which is on your shoulders, and like a child you feel relaxed and so very free of things. चलो, आज का सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल, लाइक ऑल अदर हैप्पी माइंड्स. एंड जो लोग मुझे शायद पहली बार सुन रहे हैं, या जो एक दो बार जिन्होंने सुना है मुझे हैप्पी माइंड्स, जस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू एंड शेयर विद यू कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है हैप्पी माइंड्स के थ्रू. सो व्हाट डू वी स्टार्ट विद? वी स्टार्ट विद मेडिटेशन. वी स्टार्ट विद मेडिटेशन के बाद हम आते हैं a few stories which I would like to share. People who have fought, people who have worked on themselves, people have got some success. तो उनकी स्टोरीज होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ. एंड थर्ड इज द सब्जेक्ट व्हिच आई शेयर. एंड ऑफ कोर्स कोई बीच में अगर कुछ शेयर करना चाहता है, सो वी हैव द माइक ऑन, और मे बी यू कैन टाइप इन एंड यू कैन आल्सो शेयर. बट द मेन क्रक्स ऑफ हैप्पी माइंड्स इज कि क्या लाइफ को एक सिंपल तरीके से हम और अच्छा समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज सब्जेक्ट, द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी कॉल्ड लाइफ. और उसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इतने चैप्टर्स हैं, उसमें इतने एस्पेक्ट्स हैं कि एक लाइफ कम पड़ेगी टू अंडरस्टैंड और टू नो अबाउट लाइफ. सो इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट. एंड मेरा प्रयास रहता है थ्रू हैप्पी माइंड्स कि कैन वी सिंप्लीफाई दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लाइफ, और उसको सिंपल तरीके से क्या मैं पेश कर सकता हूँ आपके सामने विद सिंपल एग्जाम्पल्स. उसको पेचीदा ना करके, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके, उसको बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा ना बना के, क्या उसको आसानी से हम समझ सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली जीना है, और जीने के लिए जितना हम सिंपल कर पाएंगे उतना ही एक्सेप्टेंस मोड हमारा बढ़ेगा उस सब्जेक्ट को लेके. एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट बैक होम, मे बी एज अ लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, मे बी एज अ पेरेंट इन योर फैमिली. तो कभी कभी ना मुश्किल सब्जेक्ट्स या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को जो हम पेश करते हैं या बताते हैं, या हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिनको हम जार्गन बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम उनको यूज करते हैं, सो वी काइंड ऑफ इम्प्रेस पीपल. तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये बड़ा बड़ा शब्द फेंका है, बड़ा कॉन्सेप्ट फेंका है. बट उसके आगे क्या? लाइफ अच्छी नहीं होती जार्गन से. लाइफ कोई बहुत बेहतर हो जाती है, या लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है. अब ऑर्गेनाइजेशंस में देखो ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा उतना ही उसके इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस कम होंगे, और जितना सिंप्लीफाइड कोई प्रोसेस होगा उतना ही उसको ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. बिकॉज पीपल वांट टू, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग हैज टू कम इन. बिफोर अंडरस्टैंडिंग, द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, ये कि ये है क्या, वो होनी चाहिए. तो क्या हम चीजों को सिंपल कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस? कोई भी वर्क प्रोसेस है, चाहे वो सेल्स का प्रोसेस हो, चाहे वो ऑपरेशंस का प्रोसेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, परचेजिंग का हो. So if you're an entrepreneur and you're listening to me, or if you're a leader listening to me right now, ensure that you simplify processes. इतना simplify कर दो कि लोगों को लगे अच्छा यही है. इतना simplify करो. The more you simplify it, the more are the chances कि वो उसको pick up किया जाएगा. जितना complicate करोगे उतना वो वहीं रह जाएगा. And then the chances of implementations become very high because you have simplified it.
एंड सेम गोज फॉर योर पेरेंटिंग, कि घर में आप क्या कुछ चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। बहुत सी चीजें हम अपने कल्चर में, अपने धर्म में हम पिकअप नहीं कर पाते बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड है, किसी ने सरलता से उसको बताया नहीं। चाहे वो ट्रेडिशन के रूप में हो, रिचुअल के रूप में हो, चाहे कुछ मंत्र के रूप में हो, चाहे कुछ हम प्रोसेस करते हो, तो शायद कहीं जो इसके विद्वान हैं, जो इसके जानकार हैं, क्या उन्होंने उन्होंने शायद उसको सोचा नहीं। उन्होंने, उनको लगा कि एक एक लेवल को मेंटेन करके हम लोगों तक पहुंच जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अगर उसको सिंप्लीफाई किया होता बचपन से लेके आज तक, हम सबके लिए, तो शायद बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ धर्म के बारे में सीख लिया होता, समझ लिया होता। तो रटने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसकी समझ को बिल्ड करें, और जब समझ आती है तो फिर हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर पाते। एंड that's how it is. So happy minds get through. The effort is, can we simplify life in whatever way we can, and together can we create a better life for ourselves? Because I always believe, and I want you to also believe, there is a better way of living possible for everything which we are doing. चाहे वो business हो, life हो, रिश्ते हो, physical fitness हो, there is a way to do things, and then there is a better way to do things. And that is what the entire concept of happy minds is, कि क्या हफ्ते के हफ्ते वीकली शॉट्स हमें मिले और हम अपनी जिंदगी को अच्छा कर पाए। एंड एक दो आज की शेयरिंग है जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा शेयर। एंड व्हेन आई गॉट दोज मैसेजेस, आई फेल्ट सो, एक होता ना कि व्हेन यू रीड अ मैसेज तो आपको लगता है कि वाह, यू काइंड ऑफ गेट energized again, you kind of feel powerful again about yourself, you want to continue doing that work which you're doing. So ये आज के कुछ मैसेजेस वहां से मैंने पिकअप किए, and I felt this is so wonderful, and I thought I'll share with you. So शुरुआत करते हैं आज की with a few sharings which I have got, and हाँ जी, कुछ एक दो मैसेजेस आए हैं, क्या है ये? हम्म, क्या बोल रही है शैबल? हैप्पी माइंड चेंज मी, आई एम ऑन टाइम फर्स्ट टाइम। चलो ठीक है, okay, keep on, and if you want to share you can have your hand up, and you know, and let's see if we can have you, and you can have, I'll have your mic on, तो आप share कर सकते हो. And of course, sorry for last week's absence. So it was after a long time that मैंने एक HM को skip किया, and skip करने का कारण भी ये था कि वो कारण 25 साल में एक बार आता है. So I was celebrating my 25th wedding anniversary, and so we had a gala time. बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम रहा, इवेंट रहा, and मेरी शादी में तो कुछ लोग आ नहीं पाए, बहुत से लोग नहीं आ पाए इनफैक्ट। तो हमने कहा चलो लेट्स रिक्रिएट अ सिनेरियो, एंड a lot of people did a lot of things. They made us walk on a ramp, and then वरमाला कराई, उठाया गया, and so I kind of went back to 25 years before, and relived my life. And in fact, both of us relived our lives, and it was such a beautiful evening, such a wonderful evening. एक होते कि लाइफ में टचवुड एक मेमोरेबल इवेंट आ जाता है which stays with you and which has the power to stay with you for life. So it was fabulous. So उसके लिए एक एचएम मिस करना मुझे कोई गिल्ट नहीं, because the event was so beautiful and so powerful. And so that's why some of you wondering कि वो last HM क्यों नहीं हुआ. It was because of that. And so I we had the celebration going on till late night, early morning, and the next day was Happy Mind. So I thought, let me not be divided in two parts. So let me be with where I should be. हमारे लिए पार्टी करेंगे करेंगे। अरे ये हर एचएम ही पार्टी है यार अंकित। एवरी एचएम आई एम गिविंग अ पार्टी टू ऑल ऑफ यू. सो पार्टी is not only about the gastronomical delights which kind of make you happy on your stomach side. I give you a party where I keep on dishing out dishes for you for your mind. Every week I'm giving you a party. वो बोलते हैं ना, Leo Buscaglia always says that life is a big buffet, and yet so many fools are going hungry to bed. So इतना कुछ है लाइफ में जो हम लोग पिकअप कर सकते हैं, उसमें से मैं कुछ डिशेस निकाल के हर हफ्ते देता हूँ। पेट नहीं भरता तुम लोगों का? चलो ठीक है, लेट्स हैव अ फ्यू स्टोरीज टुडे. हाँ. So the first sharing is, it's a
It's more than a success story. It's a kind of a sharing. And this is from Tejas, and he says, "Sir, आज मैंने." He sent me a message a day before, and he says, "Sir, आज मैंने 101 सूर्य नमस्कार किए, and it was the first time for me. Somewhere in between, I was on the verge to give up, but आपके और मैम के चेहरे सामने आ गए, and I just pushed myself further. And it feels so grateful to have you in our lives. Love you, sir." And it's such a simple sharing. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो इन्होंने शेयर किया है. I'm recovering from cough, cold and cough and things like that. So maybe बीच में ऐसा होता रहेगा. So जो ये तेजस ने शेयर किया, it's nothing extraordinary. 101 सूर्य नमस्कार किए, ठीक है. For some of you may be doing beyond that. Some of you may be doing less than that. But the reason I'm sharing this with you is जो उसने बात की, एक बात लिखी कि I was about to give up, and somewhere on the verge of giving up, your faces came in front of my eyes, and then I said, "नहीं, I have to continue." And जैसे मैंने मैसेज पढ़ा तो ना बहुत सारी memories of the past came back. I remember long back somewhere, Rachna, वो jogging कर रही थी. Rachna, my wife, those of you who don't know, and she happened to be wearing the T-shirt of Chrysalis. तो पीछे Chrysalis लिखा हुआ था. I think 8-10 साल पहले की बात है. And she shared this story in one of the Happy Mind session. और उन्होंने कहा कि I was jogging and then suddenly मेरा एक थकान होती है, फिर एक आपकी अंदर से इच्छा नहीं होती है. And she says my jog became a walk, and I was jogging, walking, and then the entire body language was not very positive. And then she says suddenly I realized that I'm wearing the T-shirt of Chrysalis, and नहीं, ये तो body language नहीं हो सकती. ये तो एक तरीका नहीं हो सकता jogging करने का. And suddenly she tightened herself up and she started jogging. And she says within few minutes I was jogging in the most beautiful way. And she shared this in Happy Minds. So what I want you to understand is कि कभी-कभी हमारी खुद की अंदर की एनर्जी कम पड़ जाती है. कभी-कभी we are short on that, or maybe we just want to give up. And then something in our mind happens. We think of somebody, we think of an ideal person, we think of somebody who means a lot to us. And in that process, कहीं हमारी एनर्जी वापस आ जाती है. We are willing to give ourselves a lot more effort, and that is what makes a difference. कि जहां पर एक इंसान गिव अप करने वाला होता है, वहां पर वो गिव अप नहीं करता, वो पकड़ लेता है. And that is that tiny thread. वो thread कौन सा है मुझे नहीं मालूम. It can be of somebody whom you know. The thread can be of a goal which you have set. The thread can be of a divine power. The thread can be of an ideal personality in your mind. The thread can be of the nation. The thread can be of your family. The thread can be of your children. Yeah, I don't know. लेकिन अगर वो थ्रेड को हम पकड़ लेते हैं ना उस समय, तो जो हम गिव अप करने वाले होते हैं, हम गिव अप नहीं करते. So when they just send this message and he says कि आपका और मैम का चेहरा सामने आया, तो मैंने कहा नहीं, 101 तो करने ही करने. So maybe for him at that moment we became the thread, और उसने उसको पकड़ लिया, and he just moved on. It's so important. And I think through Happy Minds मेरा वही एक effort है, that can I be the thread? Can I make you understand that there's a thread you can pick up? So all of us have got to have some benchmarks, some idols in our mind. Idols can be of our own performance. Idols can be of people around us. तो कोई तो हमारे मन में होना चाहिए जो हमसे ऊपर हो, और हमने उसको ऊपर दर्जा दिया हुआ है. वो चाहे लाइफ में हो ना हो, लेकिन हमने उसको दर्जा दिया हुआ है, उस चीज को, उस इवेंट को, उस इंसान को. और कहीं जब हम कहीं कम पड़ जाएं, वो अपने हमारे माइंड में बैठे हुआ हमें हाथ दे दे और हमें ऊपर खींच ले. Isn't it so wonderful? तो कौन है आपके माइंड में? कौन है वो जो आपको हाथ देगा, और आपको उस समय हाथ देगा जब आपको बहुत जरूरत हो? एंड दैट इज वेयर द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का फर्क हो जाता है. सो व्हेन आई रेड दिस स्टोरी आई सेड वाह, this is so beautiful. The second story is on similar lines. Name and the cause is withheld for reasons which I know of. And this is a beautiful sharing. This sharing says, "Namaste, sir. Namaste, Guruji. Namaste, guide. Namaste, my true parents." And that's how the entire message starts. And he says, "With your true blessings and love,
I'm out of the challenges and the crap which I was in the last 2.5 years. Last 2.5 years, very tough, mentally draining, and I could see the impact of that on my physical life, and it was very difficult time. And since I know the issue and I know the challenges, I can relate very well relate with that. He says, but I was becoming better day by day, and it's only because of you, Rachna ma'am and Chrysalis. I was attending Happy Minds, which gave me weekly vitamins, and I did programs. I did my life. I just all helped me a lot to overcome the situation. And he was going through. I will not share and the situation which he was going through, but he was going through a very difficult time. And he says, date by date, every month, I needed to be present and in that situation. And I could relate to Chrysalis by online videos, Team Chrysalis sharing some videos, short reels at the right time. And that's what I would always want. Many times, a mug of Chrysalis. There's a mug of Chrysalis which has got some statement written there. It's great to be an entrepreneur and things like that. And he says many times a mug of Chrysalis also helped me by remembering you and your teachings. I'm blessed to have you in my life, which helped me a lot in this situation. And I'm sure with your blessings, I'll do wonders in my life. And as he shared this, I said, this is more than एक होता है ना कि you feel good that you played that role, but along with that, it's a big responsibility also. And I thought the reason I wanted to share this with you is there are some people around you, and who are craving to see that in you. There's some people around you. आप देखो आपके घर में या ऑफिस में कहीं आसपास who are looking up to you as a source of inspiration. क्योंकि शायद आप ही उनके आसपास वो लीडर हो, शायद आप ही उनके आसपास वो इंसान हो जिससे वो कुछ ले सकते हैं और उन्हीं से ले सकते हैं जिन पास देने के लिए हो. So can you live a life in such a way? And that's my humble request to all of you. Can you live a life in such a way where for a few souls, I wish for as many as possible, but at least for a few souls, जो आपके विसिनिटी में है, जो आपके कनेक्ट में है रोज, क्या उनके लिए हम एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि जहां पर वो गिव अप करने के कगार पे हो, जहां पर बस वो हार मानने के लिए बैठे हो, और सडनली आपकी एक उनको याद आ जाए, शायद आपका कोई मोमेंट उनको ध्यान में आ जाए, शायद आपकी शक्ल उनको ध्यान में आ जाए, एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गिविंग अप टू फाइटिंग इट आउट वो कर ले. क्योंकि लड़ाई तो सबने अपनी लड़नी है. मैंने आपको दोनों मैसेज जो बताए, मैंने क्या किया उसमें, एक ने खुद ही पुशअप किए, एक ने खुद ही अपने चैलेंज हैंडल किए. ना मैं उसके चैलेंज हैंडल करने गया, ना मैंने उसके बिहार पे पुशअप किए या सूर्य नमस्कार किए, करा उन्होंने खुद ही. लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्रोत, एक एनर्जी का एक डोज लगता है, कहीं मैं बन गया उनके बाद. तो मैं आपसे ये कहना है कि करना तो सब नहीं है. आपके बच्चों ने पढ़ाई तो उन्होंने खुद ही करनी है, अपना करियर तो उन्होंने खुद ही चूज करना है, वो जो मुश्किलात है उन्होंने खुद ही हैंडल करनी है. सेम गोज टू योर टीम, सेम गोज टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड. बट दैट डोज ऑफ एनर्जी एट टाइम एट द राइट टाइम, वो हम बन सकते हैं आप और मैं. और उस समय के लिए वो डोज बनना, उस समय के लिए वो एनर्जी का स्रोत बनना is so very vital for the person's growth. So very vital. And that's what Happy Minds is all about. Can we become a source of inspiration for somebody around us in some way? And you will see how lives of people around us will become better. Hemant, I have your hand up. Hi. I'm having a mic on. You would like to share something? सर नमस्ते. सर नमस्ते. हाँ नमस्ते. नमस्ते हेमंत. सर अभी जो अभी आपने दो शेयरिंग किए हैं, हाँ जी. उसी संदर्भ में मेरा एक सवाल है सर. हाँ. आपके 25th वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में मैं था. हाँ. आपसे मैं काफी सालों से जुड़ा हूँ और आपका बहुत भक्त हूँ मैं. और जो मैंने उस दिन नोटिस किया कि 1000 लोग वहां थे, हर कोई आ रहा था, आपको लेके नाच रहा था, आप और माँ को लेके, और आप हर एक के साथ नाच रहे थे. पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, 50वां, 100वां, 200वां, 500वां आके हर कोई आपको लेके, दोनों को लेके नाच रहा था और आप कंटिन्यूस नाच रहे थे. तो सर मेरा सवाल ये है आप दोनों से
कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी एनर्जी सर आप कहाँ से लाते हो? ये कहाँ से आता है? आपके सर हजारों स्टूडेंट हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, और हम सब, अभी आपने दो एग्जाम्पल में देखा है कि हम सब आपकी एनर्जी पे जीते हैं। हम जितने भी मोटिवेट हो रहे हैं, आपसे हमको एनर्जी मिलती है। तो आप दोनों में एनर्जी कहाँ से आती है, ये मेरा सवाल है। Love you for your expression of love, Hemant. And as you were sharing, Mera, my mind went back to the time when we met 7, 8 years ago, for the first time when we met. And आप मेरे से उम्र में बड़े हो, and मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, but not that people should know your age, but ये आपका मानना, आपका मुझे मानना, and रचना को मानना इस लेवल पे, it reflects your love and uh, your concern and your respect for both of us. So thank you and love you for that. ये क्वेश्चन कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, आई फील दैट मैंने हमेशा कहा है और आज भी रिपीट करूंगा उस चीज को। क्या सुबह सुबह घनो इमोशनल कर दिया। तो मैं ये कहूंगा कि आपसे कि माय एनर्जी कम्स फ्रॉम यू ऑल। माय एनर्जी कम्स फ्रॉम दिस वेरी फैक्ट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। अब आपने कहा कि आई वाज डांसिंग एंड नॉट दैट इट वाज माय डे, बट आई फेल्ट दैट एक होता है ना कि आप लोग क्यों आए हो, आप लोग तो हमारे लिए आए हो ना। एंड इफ आप हमारे लिए आए हो तो फिर हम आपके लिए हैं ना, आप हमारे लिए हो। दिस वेरी सिंपल। मुझे लगता नहीं मैंने कभी सोचा इस बारे में कि मैं डांस करूं कि नहीं करूं, अच्छा ये आए हैं तो इनके साथ मैं क्या करूं। इट जस्ट हैपेंस, इट जस्ट फ्लोज। तो मुझे लगता है कि अ, अगर आप अपने आप को उस मोमेंट पे छोड़ दें एंड दिमाग वापरना बंद कर दें, तो वो एनर्जी तो अंदर है, वो फ्लो करना शुरू कर देती है। हम सबके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी का जो फ्लो है, हम कहीं शायद जाने अनजाने में हम वो फ्लो को बंद कर देते हैं बाय यूजिंग आवर ब्रेन्स। तो बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा मुझे दिमाग भी कम है। सो दिमाग भी कम है और मैं थोड़ा दिमाग भी कम लगाता हूँ, एंड आई आई जस्ट फ्लो विद द फ्लो। तो मुझे लगता है कि दैट्स द रीजन व्हाई आप लोग वो एक्सपीरियंस करते हो, जो बिकॉज आई फील दैट्स द रीजन व्हाई मेनी पीपल दे मिस आउट on using the energy to the fullest, because somewhere the brain comes and the brain has comes with its धुमछल्ला। उसके बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग के, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें क्या होगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा, विल इट हैपन द वे आई वांट टू हैपन। और जब दिमाग आता है तो फिर दिमाग फिर आपको वो फ्लो होने से रोक देता है, ऐसा मुझे लगता है। तो और दिमाग जहां लगना चाहिए वहां लगना भी चाहिए। तो मैंने बहुत बार लाइफ में दिमाग को साइड में रखा है और मैंने फ्लो में मैं रहा हूँ। उसका नुकसान भी हुए हैं काफी लाइफ में, बट इट्स ओके। बट आई फील द मोर आई लुक एट इट, तो हिसाब किताब तो मैं कभी करता नहीं, लेकिन अगर कभी करने बैठूं तो मुझे विश्वास है कि जो मुझे मिला है दिमाग ना लगाने से, वो कहीं ज्यादा है कंपेयर टू दिमाग लगाने से। So I've just been in the flow. So love you and thank you for sharing what you share. हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड if you want to share something, you can have your hand up and we can have the mic on also as you go about listening to me. मेरी एक रील बड़ी वायरल हुई है। There's another good news which I want to share with you. अरे ये होता है ना लाइफ में, एक मोमेंट आता है where you see। तो एक मेरी इंस्टा में एक रील वायरल हुई, इनफैक्ट couple of reels got viral। एंड एक रील है which I have spoken on creativity, वो तो अफलातून वायरल हो गई। उसके बाद एक और रील आई हैव स्पोकन ऑन लीडरशिप एंड हाउ डू यू लीड वेल, ओ इट हैज गॉन क्रेजी, ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 मिलियन व्यूज एंड हजारों लोगों ने लाइक किया है, उसमें कमेंट्स आए हैं, यू नो, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स ऑसम टू नो दैट some good stuff is moving around and people are liking it, because ये एल्गोरिथम क्या काम करता है सोशल मीडिया में, आई हैव नो आइडिया व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। वी हैव नो आइडिया। इतने अच्छे अच्छे मैंने रील्स बनाए इन द पास्ट, इतने बढ़िया कंटेंट बनाए, दे हैव नेवर मूव्ड ऑन, दे हैव नेवर मूव्ड, दे हैव नेवर बिकम वायरल। एंड फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू सम
वीडियो वो क्यों पिकअप होता है, क्या कारण होता है, आई स्टिल डोंट नो, एंड आई थिंक नेवर इन लाइफ ही विल कम टू नो कि क्यों वो हिट होता है. बट एनीवेज, दैट रील बिकेम वायरल एंड हाउ थिंग्स आर. चलिए, I'll throw some names to all of you, and hmm, क्या है लक्ष्मी का क्या है, वेरी ट्रू सर, दिल से ओवर दिमाग, एब्सोल्युटली. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आप दिल से काम करिए और दिमाग लगाना वो बंद करिए, बट मेरे से अगर आप पूछो कि दिल या दिमाग, तो मैं तो दिल पे ही जाऊंगा, राइट. इफ देयर इज अ ऑप्शन कि एक ही चूज करना है, ऑफ कोर्स यू गॉट टू यूज द दिमाग आल्सो एज एंड व्हेन वी नीड टू. बट अगर दोनों में अगर एक ही चूज करने का एक ऐसा समय आया, तो आई वुड प्रेफर माय दिल ओवर दिमाग. And it depends on people to people. Creativity was my favorite. Oh yeah, yes, Rahul, chalo, good. मैं आपसे कुछ नाम शेयर करूं, एंड ऐसे रैंडम नाम, एंड देयर नेम्स ऑफ पीपल व्हिच आर हु आर फेमस, ठीक है, द फेमस नेम्स. धोनी, राइट, हमने नाम सुना है. सचिन तेंदुलकर, नाम सुना है हमने. सीवी रमन, नाम सुना है. श्रीनिवास रामानुजन, हमें नाम सुना है. Mahesh Bhupati, abhi recently, he became the oldest player in the world to win a Grand Slam. Right? मैं नाम सुना है. शंकर महादेवन, अभी recently Grammy Awards. Zakir Hussain साहब, they recently won a Grammy Award. और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो वर्ल्ड ओवर फेमस है. तो अभी मैंने सिर्फ ऐसे कुछ 7-8 नाम आपके सामने लिए. आप मुझे बताओ, जस्ट wanted to get a feedback from you. ये जो नाम है, ये जो जिंदगी हैं जिन्होंने जी है, what happens to you when you listen to the names? क्या इनका क्या इनके नाम से या इनकी जिंदगियों से क्या फर्क पड़ा? आपको क्या फर्क पड़ा? चलो, आपको क्या फर्क? मैंने ऐसे नाम, रैंडम नाम दिए, ऐसे बहुत सारे और नाम भी हो. दे आर नोन नेम्स, दे आर ग्लोबल नेम्स, वर्ल्ड ओवर. आई एम टॉकिंग अबाउट दे आर नोन वर्ल्ड ओवर. हाँ जी. तो मुझे बताओ, आपको क्या फर्क पड़ा ये इनके नामों के बारे में जान? These people inspire us to do better. Okay, ठीक है. As an Indian, we feel proud and are motivated to put in more effort. Okay, ठीक है. हाँ, there's nothing called right or wrong. I'm just making you think, to give a best. Feel anything is possible if you are determined. Hmm. These people inspire us. Okay, proud feeling and motivated. Hmm. Motivation. ठीक. Type them as and when you can type. Dhana says, so we can also do something. ठीक. I just took some random names, and names ऐसे हैं जिनको आप जानते हो. Now, what I want to communicate more than anything else, yes, they inspire, they make us, they push us to do something better. They're telling us that, hello, तुम भी कुछ कर सकते हो, उठो, जागो, कुछ करो. ये सब वो कर रहे हैं. But one thing which I feel is more than anything else, one thing which hit me when I was thinking about these names and many more names, they instill in us a very strong sense of pride. They instill in us a very strong sense of pride about our country. Very strong sense of pride. Somewhere, they're from India, or they're from our place. एक ऐसा सीना चढ़ा होता है. Instill a sense of pride. They make us feel good about our country. They make us feel good that we also have some connection. Listen to me very carefully. They make us feel good about the very thought that we have some connection. जबकि हम मिले नहीं उनसे, ना हमारा कोई रिश्ता है, ना हमें वो प्रॉपर्टी देके जा रहे हैं, ना हमें कोई मेडल देके जा रहे हैं.
ना हमें वो पीठ पे थपथपाएंगे यार तुमने मेरे बारे में बात की। कोई नहीं जान रहा है, कोई हमें पहचान नहीं रहा है, कोई हमें कनेक्ट भी नहीं कर रहा है, कोई हमें दे भी कुछ नहीं रहा है, बट जस्ट दिस वेरी थॉट दैट ओ आई वी हैव सम कनेक्शन is making us feel good. That's the power of people who have lived a life at a higher level. They kind of uplift. एक इंस्पिरेशन तो अलग बात होगी, you get inspired to play that game and do that, but there is, you uplift that spirit whenever they think of, whenever they are thought of, they kind of uplift the spirit. कि अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड में बोलते हैं तो जो क्रिकेट वर्ल्ड है तो they say okay Sachin is from India, Dhoni is from India. Somewhere there's a sense of pride in all of us. And the more I think about these are international names, but somewhere we can be our family names, we can be our company names, where somewhere in the company there is some other person who may not be from our department, who may not be who may not be meeting us on a daily basis. लेकिन अरे ये मेरी कंपनी का लीडर है, मेरी कंपनी का ये टीम मेंबर है, ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है, अरे ये मेरी सोसाइटी में रहता है, अरे ये मेरे शहर का है. Somewhere the power, somewhere the potential, somewhere the possibility is there that each one of us can instill in that for the moment a sense of pride where people are lifted. They're lifted for the moment whenever they think about us. They can be lifted. So can we live our life in such a way? And one of the simplest ways by which we can do it is, can we constantly work on ourselves and make ourselves better? I was reading about Sachin Tendulkar, and beautiful story came out. And if you talk about Sachin ki agar hum baat kare, so what is that thing which made him a legend, which he was, which he is? Is it his innate talent ki unke andar inner talent tha, and the way he would move his wrists, the way he would have his footwork. एक होता है ना कुछ लोगों का innate talent होता है कि by default talent है, by default he can play shots in a certain way, और उसकी वजह से वो उस बॉल, he would be able to put the ball behind the boundary a number of times. तो क्या वो टैलेंट था जिसकी वजह से वो कामयाब हुए या लेजेंड बने, या फिर उनका कोई एटीट्यूड था जिस एटीट्यूड को लेके वो फील्ड पे आते थे? Right, the match where he got hit on the nose, I don't know how many of you remember that match, and he had a bleeding nose, and उनके opposite में non striker end में Navjot Singh Sidhu was there, and Sidhu said यार तू जा वापस, अभी तू तेरे चोट लग गई है. Even the captain came and said, "Wait, you can come back, you can retire hurt." And all of 16, 18 years of age, whatever his age was, Sachin says, "नहीं मैं खेलूंगा." And that statement became very famous, "मैं खेलूंगा." So was it that attitude of his which made him, uh, become a legend? Of course, ye do to hai, but there is something else which we all miss out, because that's not that's something which is not spoken about that much. So I'll share with you something which is there and see if we can pick up something from there and make our lives better. तो गैरी कर्स्टन जो उस समय के कोच होते थे क्रिकेट टीम के, तो जब वो रिटायर होने वाले हुए तो उन्होंने, उनका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में उन्होंने बात करी क्रिकेट के बारे में. एंड क्रिकेट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही वुड टॉक अबाउट सचिन. व्हाई वुड ही मिस आउट ऑन टॉकिंग अबाउट सचिन? तो he shares about Sachin Tendulkar. He says with all that which Sachin was, all that, मतलब इतनी सारी सेंचुरीज, इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतना सब recognition worldwide, with all that he was, before every match he was like that student who would read the entire book for the exam. ये गैरी कर्स्टन की स्टेटमेंट है. He said, in spite of all that which Sachin was, before every match, he would be like that student who would read the entire book for the exam. Now, when I say that, read the entire book for the exam, मतलब हम अपने आप को देखते हैं तो एग्जाम के लिए हम वो छटे हुए चैप्टर्स पढ़ते थे, कौन से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते थे. कुछ लोग तो इंपॉर्टेंट छोड़ो, जो आने की पॉसिबिलिटी है वही क्वेश्चंस का आंसर पढ़ते थे. चैप्टर भी छोड़ो, कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, अरे पिछले एग्जाम में नहीं आए, चलो इस एग्जाम में आएंगे, सो लेट्स रीड दोस क्वेश्चंस.
तो ये सचिन उनमें से नहीं थे. Sachin would read the entire book. And so, so Gary says कि this is so amazing. And अगर किसी को बुक ना पढ़ने की छूट है, तो वो तो जो क्लास में फर्स्ट आता है उसको छूट है ना. Because he's already coming first in the class. So if he doesn't read a book, if he doesn't read a chapter also, it's okay because he already knows so much. But Gary goes on to say that for every 100 which he scores, he must be facing 200 balls, 150 balls to score that 100 runs. People don't know. We just have the stats कि उन्होंने वो 100 रन बनाने के लिए 150 बॉल खेली, 200 बॉल खेली. But for every 100 runs he scores on the match or in the match, उसके लिए वो नेट में 300-400 बॉल खेलते थे, कभी कभी 1500 बॉल भी खेलते. And that was a daily routine for him कि मैच होने से पहले he would be on the nets for hours and hours and hours. And he would think in his mind कि if I have to score a century there, this means I have to face 150-200 balls. तो नेट में तो मुझे फिर 300-400 बॉल फेस करनी. अगर मुझे वहां पर डबल 100 बनाना है, तो यहां पर मुझे 600-700 बॉल तो फेस करनी है. एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स कि मैं कल कैसे खेलूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या बॉल्स आ सकती हैं. एंड ही वुड मेक द बॉलर बॉल दोस काइंड्स ऑफ बॉल्स टू हिम इन स्पाइट ऑफ बीइंग सचिन. तो बहुत सारे लोग जो है उस लेवल पे जाके दे वुड काइंड ऑफ not be so disciplined, not be so you know into practicing and preparation. So when you give your 100% and you go beyond that, that's a time when a genius or a legend is born. And the moment I read this and I this entire story, I said, isn't it so obvious which we miss out on? कि जो जितना अच्छा होता है वो और अच्छा बनने के लिए मेहनत करता है, और जो जितना कमजोर होता है वो उतना ही काम करने से जी चुराता है. And I've said this quite a few times and I'm saying it again to you. Go to the gym and you will find out कि जिसकी जितनी अच्छी बॉडी है जिम में, वो उतना ही डिलिजेंटली, उतना ही इन्वॉल्वमेंट के साथ एक्सरसाइज कर रहा है. जिसकी जितनी बॉडी आउट ऑफ शेप है, दो राउंड इज ऑल्सो शेप, तो जिसकी जितनी बॉडी आउट ऑफ शेप है, वो उतना ही लाइटली वो इससे बात करेगा, उससे बात करेगा, वहां टाइम पास करेगा, मोबाइल में कुछ देखेगा, फिर एक्सरसाइज करेगा, फिर टाइम पास करेगा. और जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, वो मोबाइल पे टाइम पास नहीं कर रहा है, वो उसके सेट्स लाइंड अप है, वन सेट के बाद सेकंड सेट, फिर थर्ड सेट, फोर्थ सेट, वो अपना करे जा रहा है, डिसिप्लिन तरीके से कर रहा है, कोई छुट्टी नहीं मारता है, कोई ब्रेक नहीं लेता है. जबकि ब्रेक लेने का उसको हक है, जबकि उसको एब्सेंट होने का हक है, उसको टाइम पास करने का भी हक है. लेकिन जिसकी बॉडी अच्छी नहीं है, उसको तो हक ही नहीं है ना टाइम पास करने का. उसको छुट्टी लेने का तो सोच में आना नहीं चाहिए. लुक एट द वे द वर्ल्ड इज, जिसको नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज वो और करे जा रहा है, जो बच सकता है एक्सरसाइज करने से वो और मेहनत कर रहा है, और जिसको बचना नहीं चाहिए वो बचने के हजार रास्ते निकाल रहा है. एंड सेम गोज टू अ स्टूडेंट इन स्कूल. The ones who coming first, they're studying all the more. The ones who are in first from behind, they are finding more ways how do we avoid studying. The same goes in business. कि जिनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, they're the ones who are finding better ways. They're the ones who are getting some coaches around. They're the ones who are getting some consultants on board. They're the ones who are getting them great team members on board. They're the ones who are investing on machinery. They're the ones who are investing on system process. तो वो अच्छे बन गए हैं, और वो अगर नहीं भी करते हैं ये सब चीज, तब भी उनका काम अच्छा चलता रहेगा. लेकिन अच्छा बनने के बावजूद भी और अच्छा बनने के लिए ख्वाहिश रखते हैं. एंड द वंस हु आर नॉट डूइंग ग्रेट इन बिजनेस, जिनको सख्त जरूरत है, जो आईसीयू में है, they need consultants, they need some mentoring, they need some coaching, they need some great guys, they need some investment to be done. ये उल्टा ही जी रहे हैं. Can you connect with what I'm saying?
So you got to ask yourself, am I the one who has a right to escape becoming better in whatever area I am? Do I have the freedom? Do I have that opening where I can skip exercise today? Or am I the one who cannot skip exercise for the next 100 years? Am I the one who cannot skip becoming better in my profession, even for a day? Or is it okay if I just take a few days off and lightly and not develop myself for this week or for this month? It's okay. You got to ask yourself. I would not know your position. लेकिन आपको खुद से पूछना पड़ेगा. Because a few HMs back, I shared about this, that the ones who keep on developing themselves, they're crispy. The ones who keep on becoming better in their own lives, in whatever way, they're amazing. In fact, they get a compliment which from people, oh, amazing. Yeah, last time I spoke to you, and this time I'm speaking to you, there's a world of difference in the way you are communicating right now. Isn't it amazing? And last time we met, and this time we met, अरे कितना slim हो गया है. The way you are physically fit now, it's amazing. Well, last time I met you, and then this time I'm meeting you. What kind of thoughts? What kind of thoughts? What kind of clarity you have? This is amazing. Wouldn't you like to hear the word amazing from the world around you? And that happens to people who keep on evolving, keep on becoming better, better, better. They keep on coming out with a better version of themselves. And the ones who are kind of becoming better, they're the ones who are ready for any setbacks. They're the ones who bounce back from any setbacks. They're the ones who kind of, they're able to handle any situation given to them. So I'm just sharing this with you. I think there's so much to learn from Anji. So the question you got to ask yourself is, जीनियस तो बनना है, लेजेंड तो बनना है, कामयाब तो बनना है, वो 400 बॉल्स फेस करने का कहाँ है आपका स्टैमिना? वो नेट प्रैक्टिस किधर है आपकी? और वो नेट प्रैक्टिस लेजेंड बनने के बाद नहीं करोगे तब भी कोई सोच सकता है कि यार ये तो लेजेंड बन गया है. आप तो लेजेंड के एल भी नहीं हो, उसमें भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और चाहते हैं आपकी जो है लेजेंड वाली है. तो इसको बोलते हैं ना, कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, तो चाहिए आपको जो भी, आपको बॉडी अच्छी चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, आपको अच्छा पैसा चाहिए, आपको अच्छा रिश्ता चाहिए, वॉट एवर. सो इफ आई वुड कॉल इट द मर्सिडीज ऑफ योर लाइफ, सो वॉट एवर यू वॉन्ट, दैट्स द मर्सिडीज. ठीक है. और आपकी जो करंट हरकतें हैं ना, वो करंट हरकतें आपको सिर्फ बैलगाड़ी दिला सकती है. तो चाहिए क्या? मर्सिडीज. आपके सारी हरकतें कैसी हैं? बैलगाड़ी वाली. चाहिए क्या? एक अच्छी बॉडी, फिट बॉडी. दैट्स योर एस्पिरेशन, दैट्स योर मर्सिडीज. हरकतें क्या है? वड़ा पाव, पेस्ट्री, केक, फलाना ढुकाना. सारी हरकतें आपको है बैलगाड़ी दिला सकती हैं, बट चाहते हैं आपकी हैं मर्सिडीज की. तो जब मर्सिडीज की चाहते और हरकतें बैलगाड़ी की हैं, इसको बोलते हैं येड़ापना, इसको बोलते हैं पागलपन. कि what you're doing and what you want, they're two different worlds. And if somebody is willing to become better, that person can become better from can get inspired from anything around him. Everything around you can teach you. The smallest of creations in the world can teach you something. The smallest of creations. Let's take an example of an ant. अगर तुम चींटी की लाइफ को देखोगे ना, तो चींटी भी आपको जो है ना, ऐसा आपके गुरु बन के चपाट लगा के निकल जाएगी कि भाई मेरे से कुछ जिंदगी में सीख ले. And trust me, if you look at an ant will teach you that this beautiful combination of what is being rigid and what is being flexible, वो एक combination देती है. And if I were to give an example of an ant, कि rigidity क्या है? The ant is rigid about its destination. मतलब फिक्स है उसका डेस्टिनेशन, हिलती नहीं है वो. उसे सोच लिया मुझे वहां जाना है, तो फिर वो जाना ही जाना है.
रिजिड है, बट येट द एंट इज फ्लेक्सिबल इन इट्स अप्रोच। तो उसके रास्ते में आप रुकावट, और बचपन में हम करते थे ना ये सब हरकतें करते थे, वो चींटियां जा रही है लाइन में तो उसके आगे उंगली लगा दी, एंड नाउ वी आर वंडरिंग एज चिल्ड्रन अभी क्या करेगी चींटी। अरे चींटी कहती है अच्छा उंगली यहाँ लगाई, मैं साइड से निकल जाऊंगी, फिर हम साइड में करते तो कहते ऊपर से निकल जाऊंगी, ऊपर कुछ किया तो नीचे से निकल जाऊंगी। वो कहती है मैं फ्लेक्सिबल हूँ, अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए जो रास्ता पिकअप करना है उसके लिए मैं फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे लक्ष्य के लिए मैं रिजिड हूं, मैं फिक्स्ड हूं, जाना तो मुझे पक्का है। इट्स एन अमेजिंग लेसन एन एंड कैन टीच अस, एंड येट आई सी मेनी पीपल हु आर जस्ट द ऑपोजिट। वी आर ऑल्सो रिजिड एंड वी आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, सो वी आर फ्लेक्सिबल इन आवर गोल्स एंड वी आर रिजिड इन अ पाथ। नहीं मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, अरे बाबा नहीं हो रहा है उस रास्ते से, नहीं नहीं मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, अरे येड़े उस रास्ते से नहीं जा पाएगा, ना ना मैं ही रास्ते से जाऊंगा। वी आर रिजिड इन आवर सिलेक्शन ऑफ पाथवेज एंड वी आर फ्लेक्सिबल इन आवर गोल्स। ठीक है अगर यहां नहीं गए तो वहां चले जाएंगे। एंड हियर इज आवर गुरु कॉल्ड एंट। तो एंट बोल रहा है भैया मेरे से कुछ सीख लो, किस बारे में रिजिड होना और किस बारे में फ्लेक्सिबल होना है ये तो समझ लो। एंड समवेयर इफ यू वुड सी, जिसका एक लर्नर्स अप्रोच होता है ना, एक लर्नर्स एटीट्यूड होता है, वो किसी भी चीज से आसपास से कुछ भी सीख सकता है। And the deeper you go into this, and I'm talking about the tiniest of creations on this planet called the ant. The ant is a great planner. जब समर्स आते हैं, जब लाइफ इज गुड, it starts planning for the winter. It starts planning. And when winter comes, it practices patience. It waits. The more deeper you go, the more you'll understand how much this guru of yours can teach you. Guru means the ant guru. जो चीटी गुरु है आपकी, इट नोज। अगर आपको कमिटमेंट देखना है या समझना है, देयर इज नोबडी हु कैन टीच यू कमिटमेंट बेटर देन द एंट। व्हेन आई से कमिटमेंट, आप एक ऐसी ऑब्जर्व करना, आज इस हफ्ते का असाइनमेंट ऐसे ही ले लो, चलो आप, यू ऑब्जर्व एन एंट, एंड व्हेन यू सी द एंट मूविंग, तो एक ऐसी एंट को देखना फॉर जस्ट अ फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स, आप एंट को देखना, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आई एम सेइंग राइट नाउ। आप देखोगे जब मैं कहूंगा, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना, एंड यू विल बी काइंड, यू विल स्माइल आल्सो, एंड यू विल नॉड योर हेड एंड यू से हाँ आप सही कह रहे हो। एंड what I'm saying right now is, what I'm going to say right now is, the ant is committed. When I say committed, इसका मतलब क्या है, आपके एंट के हरकतों में जो वो जी रहा है ना, वो चल रहा है यहां से यहां तक, उसके जीने में आपको कमिटमेंट दिखेगा। मतलब इट इज गिविंग एवरीथिंग इट हैज एट दैट मोमेंट। उसने कोई बचा के नहीं रखा है अपने पास। इट्स कमिटेड टू दैट मोमेंट, इट्स कमिटेड टू लाइफ एट दैट मोमेंट, इट्स कमिटेड। देयर इज नो हाफ हार्टेडनेस, देयर इज नो यार देखते हैं करते हैं, देयर इज नो डाउट, देयर इज एब्सोल्यूट कमिटमेंट। मतलब कोई चींटी आपको अपनी हरकतों से बताएगी नहीं यार चल रहा है यार, हो रहा है यार, देखते हैं। हर चींटी अपनी हरकत से कह रही है कमिटमेंट। मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मैं निछावर कर रही हूं, मैं दे रही हूं फॉर दिस मोमेंट। ये जो अगला कदम है मेरा, ये मेरा 100% का कदम है, ये डाउटफुल कदम नहीं है। आप मेरे साथ हो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेसन्स आई हैव लर्नड फ्रॉम एन एंट इज व्हाट कमिटमेंट इज। कि जिस काम में है वो उसमें फिर दिमाग लगाने का नहीं, वो उस काम में इतना, यू आर देयर विद 1000% कमिट, यू आर देयर विद योर सेल्फ, देयर इज नथिंग विच यू हैव नॉट गिवन। तो हेमंत बोलते हैं कि क्या है वो which makes you do this, which makes you have so much of energy. Many times I have my aunt as a guru. अब मैं हूं वहां पर उस शाम को, and there's so many who have come to celebrate with me. There's so many who have come to wish us. There's so many who have brought their love. Why they have come? They have not come here to just do time pass ना। हर आदमी अपनी शाम, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ के आया ना हमारे पास। जितने भी इंसान आए हुए, वो क्यों आए? बिकॉज दे लव अस ना।
थोड़ी ना मजबूरी है किसी की, यहाँ हम कोई वहां पर बांट रहे हैं तो भाई ये नहीं गए तो ये नहीं मिलेगा, टीवी फ्रिज बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, दैट्स व्हाट वी डू एंड दैट्स व्हाट दे वुड नॉट कम फॉर। तो क्यों आए? बिकॉज दे हैव लव, और वो प्यार की एनर्जी लेके आए हैं, एंड दैट्स व्हाट वी गॉट टू गिव देम, एंड यू गॉट टू बी एट दैट मोमेंट, जो है पूरा निछावर दो, दे दो, पूरा निछावर कर। And that's what the ant does. And that's what the ant is saying to each one of us. दे दो यार, किसके लिए बचा के रखा है दैट मोमेंट? तो जिस काम में आपने अपने आप को फिक्स कर लिया, ये मेरा टारगेट है, वो एक चींटी ने बोल दिया मेरा टारगेट है, और उसके बाद द एंट इज कमिटेड। हर कदम में उस कमिटमेंट दिखता है। एंड आई एम सेइंग टू यू अगेन, देखना किसी चींटी को 1-2 मिनट के लिए, और मेरा आपको ये डायलॉग आपको याद आएगा, समझ में आएगा कि कमिटमेंट क्या होता है। और आप देखो आपके आसपास जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, रिश्ते में है, तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर चींटी है कि नहीं। अगर उसके अंदर वो चींटी है, उसके अंदर वो एंट है, तो वो कमिटमेंट के साथ उस काम में होगा, उसने झोंक दिया होगा अपने आप को उस काम, चाहे वो काम 5 मिनट का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, उसने झोंक दिया अपने आप को, मतलब ही इज इन टू इट। देयर इज नो हाफ हार्टेडनेस, देयर इज नो डिली डायलिंग, देयर इज नो टाइम पास, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो देयर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, देयर इज नो अप्रोच ऑफ ढीलापन इन इट। मतलब उसने झोंक दिया अपने आप को, उसके पास उस समय और कुछ नहीं है देने को, सब दे दिया उसने। तो मेरा आपसे कहना, अगर आपने एक पल भी ऐसे जी लिया कि आपने जो आपके पास है आपने झोंक दिया उसके अंदर, यू गिव ऑल दैट विच यू हैड एंड ऑल दैट विच यू हैव, व्हाई विल द वर्ल्ड नॉट गिव यू ऑल दैट विच इट हैज? व्हाई विल इट नॉट गिव इट? मास्टर लेसन फ्रॉम आवर गुरु फॉर टुडे, द एंट गुरु। हाँ जी। विनायक भी क्या, कल से ही जिम लगाए सर, 100 साल के लिए। हाँ जी। चीटी से कुछ समझ में आया? तो आज के बाद कहीं भी चिट्ठी दिखे ना, अच्छा प्रणाम करना, गुरुदेव। हाँ जी। The major challenge which all of us have is, most of us, I all is a very harsh word, I would give discount, for most of us is, हम committed नहीं। and commitment क्या है? Commitment is giving everything of you to that moment, giving everything of you to that goal of yours, giving everything of you to that relationship of yours, giving everything of you to that business of yours, giving everything of you to that study of yours, to that job of yours, giving everything of you. Nothing is safe, nothing is left behind, nothing is discounted. It's all which you have. एक बार तो ऐसे जी के देखो, and you will understand the word commitment. प्रणाम चीटी महाराज। एंड द एंट मैन एंड द एंट वुमन बन जाओ आज के बाद से। हाँ जी। Sharad, you want to share something? I have your mic on. If you have raised your hand. Uh, Rakesh Khanna. I just read Rajesh Khanna. Some Rakesh Khanna says,
lifeless, but don't know. After some time, everything becomes disappear from mind. It happens. I would agree with you, Rakesh. ऐसा होता है कि after some time. That's why you need to be regularly in touch. So with the learnings, you have to be regularly in touch uh, with that thought process. You have to keep on putting it in your mind. So why do people become depressed? Because there's one thought they're in touch with all the time. One thought, one thought. And that thought is not positive. It's a negative thought. It's on their mind. It's on the mind. They don't forget it. They don't miss out on it. And then what happens? The result is they go into depression. They go into that sadness. They're not missing out. They're not forgetting that thought. They're remembering it again and again. Why do you hate somebody? It's that one thought about that person. You keep on remembering it, keep on remembering it, keep on remembering it. You don't miss out on it. And that's why the end result is you hate somebody. And that thought is not negative. That thought is not positive. The thought is negative. तो आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट लेके बैठे और उसको आप बार बार याद कर रहे हो तो उससे आपके मन में हिटेड होती है सेम वे आई एम सेइंग सो योर पॉइंट इज राइट कि ये याद नहीं रहता है क्योंकि शायद आपके लिए आप मतलब आई एम नॉट सेइंग राकेश बट मैं जनरली बोल रहा हूँ शायद हमारे लिए किसी को नफरत किसी से जलन करना नफरत करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग आवरसेल्व्स बेटर सो if you keep on remembering it, keep on holding on to it. Why do you hold on to a thought? Because you think it's important. And if you think this thought is important, so remember that ant in your mind. And it should, the moment you think of commitment, ant should come in, attack. Because आपने इतनी बार उसको याद कर लिया, इतनी बार याद कर लिया. So be conscious about it. So आज से लेके अगले एक हफ्ते तक, see if you can every day you start with 5 minutes, just 5 minutes, not even 5 minutes. I'm saying 2 minutes. मैंने आपको इतना अच्छा एनालॉजी दिया है even just for 2 minutes you in the morning you think of ant put a picture of ant in front of your screen in the mirror wherever you just for 2 minutes you see that ant and you think of the lesson which I shared with you for the next 1 week it will be a part of your life commitment will be a part of life तो फिर आपके पास ये सवाल नहीं रहेगा कि वो मन से निकल जाती बात क्योंकि आपने इतनी बार सोच लिया उसको फिर मन में रहेगी But why would you do this? Why would you put a picture of the ant? Why would you revise this HM? Why would you revise this point? Why would you go to YouTube and see this video again? Because it's important for you. Just like किसी के बारे में बुरा सोचना was important, तो आप बुरा सोचते रहे, and then you started hating that person. Just like depression was important that you kept on thinking negative because you wanted to feel low. जितना वो important था, उतना अगर ये important हो जाएगा, you will have that. हाँ जी. Oh, ऋषि क्या बोल रहा है? For me, you are legend, you are guru. We know how much you do daily upgrades, minutes by minutes upgrades yourself. We know how much daily hard work and health and personal life. Yeah, और बोल ऋषि. I'm feeling so good. In all spectrums of life. Love you, sir. I love you too, Rishi. And that's so wonderful of you to write down. I think that's what we all got to do also. Through our lives, we speak. So even if we can't speak, somebody shared with me a few days back. So I can't speak. How do I inspire people? You don't have to speak to inspire. You have to live well to inspire. And if you can, along with that, if you can speak well, nothing like it. But it's okay if you don't speak well. That's one aspect of it. But you can live well, right? And if you live well enough, you will speak well enough through your life. You don't have to worry about actual speaking. But if you live well, so ensure you live well in all aspects of life. तो आज का ये HM चीटी के नाम, हाँ, आज का HM चीटी के नाम. हाँ जी, कैसा रहा आज का HM? I think just by listening to you and बनने की एनर्जी आ जाती है. I love you, Mansi. Thank you for that. I agree with Rishi. We get knowledge in simplest way. Today's session is simplest of it. Very touching and neat of the art. Thank you, Naren. Thank you. Love you. And then that's what the objective of every HM is. मैं जानबूझ के, and I'm telling you again, मैं जानबूझ के
कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पे बात नहीं करता, या फिर मैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को इतना सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको लगता ही नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स है. अगेन, व्हाट आई स्टार्टेड एचएम विद, लेट मी रिपीट दैट अगेन. Complexity is the biggest reason why execution doesn't happen. Complexity and execution, ये दो विपरीत चीजें हैं, हो नहीं सकती. Simplicity and execution can happen. So the more you want things to be executed in your company, the more simple you have to make it for your team to digest, to understand, and to execute. Complexity is the enemy of execution. तो चीजों को सिंपल करो. हाँ जी. So, and theory, oh yes, जय चीटी जी की. आज चीटी को एडमिशन मिल गया. अरे वाह. ट्रू, बट सिंपल लिविंग इज वेरी डिफिकल्ट. तभी तो मजा है लक्ष्मी. इट्स डिफिकल्ट ना, आसान चीजों को कौन करेगा. टेक अवे कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट. टेक अवे इज कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट. अच्छा ठीक है, आई से टेक अवे कंसिस्टेंसी. सर योर स्पीच इज वेरी इंस्पिरेशनल. अरे वाह, थैंक यू सो मच. मुझे आपने बताया, जागरूक कराया. चलो, गुड. My life is inspirational. That's what I want to tell myself every day. More than my speech, my life. And it's not something big which I'm speaking about. I'm saying that each one of you, make your life inspirational. And then talk will happen inspiration. Don't worry about your talk. Life. Why would somebody follow you for years? I've been in this industry for 26 years, 27 years now. Why would somebody be there with you for 27 years? When for my anniversary, we had Chrysalis, my friends who have become friends. They from 25 years ago, जब वो students थे मेरे 25 साल पहले, वो तब से लेके अभी आए. So I've got relations with them, and they've seen me as the mentor, as the guru 25 years ago. Why would somebody follow you for 25 years? Why would somebody still look up to you for 25 years? You can't fool the world with your speech for 25 years. अगर ऐसा कर पाए तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त स्पीकर हो यार, और वो मैं नहीं हूं. But if you have lived well, then people definitely will get inspired. So मेरा आप सबसे request है, all of you, humble request, live well and you will speak well. That's for sure. Your life will speak well. When क्या कह रहे हो तुम? Ant can lift 300% more than its weight. This is good knowledge. After listening to you, feeling आता है कि ऐसा कुछ करूँ लाइफ में. Ant can lift 300% more. तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ तो लिफ्ट करें, अपना वेट के अलावा कुछ और लिफ्ट करें. There is so much to lift. There's so much to lift around us. Ant is also humble. You know that? वो एक लीडर को फॉलो करता है. वो ऐसा ईगो नहीं रखता है इसको फॉलो नहीं करूँ. Ant is very humble. Ant is also a great team player. वो टीम में फिट हो जाता है, उसको रास्ता दिखता है, वो 10 एंड्स को और बोलता है ये रास्ता है, चल. वेरी गुड टीम प्लेयर. But there are so many lessons which you can learn from the ant. No ego, no such problems. ये मेरा लीडर नहीं बनेगा, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा. No problems with being a team player. I will not work with this guy. This guy is useless. Right? And imagine each ant which can lift 300% more than its weight. And such 10 ants coming together. What awesome things they can create, and they end up creating ant hills, and then we have all heard about those stories so much. Every morning I listen speech and get energy for the day. That's nice. Thank you. Love you, NG, for everything. चलो भाई, आज के HM की जय हो. So keep on staying inspired. Remember the ant. Let's become ant man, ant woman, whatever you want to become. बच्चों को share करो. Tell your friends, relatives to be there. And tomorrow we have a wonderful day. Vidisha is going to take a webinar on sharing with the world about the whole concept of Arasamasti. How do you make your business much more powerful? So Arasamasti module क्या है, program क्या है? It's going to be a big day for her, and this is the first webinar, and I wish her the very best.
that she's conducting a webinar for Aras Samasti. मतलब हमारे from the offering of Chrysalis, the biggest offering is there is Aras Samasti, and she's going to speak and share on that subject tomorrow. So I see a huge transformative journey of for Vidisha the last so many years. It is one of the pinnacles of her life, and I'm so very excited and so very looking forward to this beautiful thing. So आपके अगर friends हैं, आपके कोई भी जानने वाले हैं जो business में हैं, those who would want to benefit from listening to Vidisha, she'll be sharing what Aras Samasti program is and what can this program do. Of course, with a lot of business insights, she will share, and she will pour all her understanding, knowledge, samajh, and into tomorrow's webinar. So I'm sure all of them, जो हैं उस webinar में, they are really going to have a treat listening to her. And I, as a mentor, as a guide for her, मेरी तो अलग ही एक trip रहेगी to see her blossoming in such a wonderful way. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं नीला सर? चींटियां क्या लिखा है आपने? मारने का शौक आता है वो लाइफ ड्रॉ करते हैं। हाँ, जो चौक आता है, चींटियों को पता होता है उसको पार करेंगे तो मरेंगे, फिर भी रुकती नहीं क्योंकि सामने वाली चींटियों को फूड दे सके। एब्सोल्युटली, अरे वाह, क्या क्या सबक आ रहे हैं। चिंटू टू चीटी। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू शेबल, love you Neeraj. Today's learning is that I should be rigid about our destination and flexible on the path. Absolutely, because रास्ते जो है ये हमारे हिसाब से नहीं होंगे। रास्ते दुनिया देगी, तो कोई अच्छे होंगे, कोई मुश्किल होंगे, but we can find our ways. We can find different ways which suits us. So don't be rigid about the pathway. Be rigid about the destination. बहुत जरूरी है. Don't just be the opposite. So in one HM, you had given an example of cockroach, cockroach guru, and today ant guru. Your simple style of teaching is amazing. I love you, Rajendra. Thank you for sharing this. और हम सब वही तो हैं, हम चिंटू पिंटू, हम ये सब वही है, तो जितने इनको गुरु बना लो। चलो, love you चंद्रमोहन। चलो, God bless you all, and I'll see you next HM with another चिंटू पिंटू story. चलो, मिलते हैं। विवेक, एंट इज फैंटास्टिक सोशल एनिमल। अरे क्या बात है, अभी सब ने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया एंट का, सब निकाल रहे हैं अभी क्या क्या एंट करता है। यू आर लाइक कृष्णा फॉर पांडव्स ऑल ऑफ अस। आई शाबाश। अरे इतना मत चढ़ाओ चने के झाड़ पे, अभी मुझे जाके चाय बनानी है अपने लिए। हाँ, चलो, एंड